हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन वर्मा's आईएएस एकेडमी। आई एम श्रीकांत त्रिपाठी और आप सभी लोगों का स्वागत है जतिन वर्मा's आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, ये सेशन हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो हमारे बैचेस हैं, ओके, ज्योग्राफी ऑप्शनल, ओके, इसके रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, एक सेकेंड, लेट्स जस्ट सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस येट। एक बार देख लेते हैं जरा। Okay, so we have discussed this thing that the course for geography optional is going to start from 15th of July 2021. The target will be around 3 to next 3.5 months. मतलब अगले 3 से 3.5 महीने के बीच में हम लोगों का ये टारगेट है कि हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शन हमारा जो है वो उसको कंप्लीट करवा देंगे, राइट। अब हम लोग अभी कुछ ऐसे सेशंस देख रहे हैं। एक तरीके से व्हाट यू कैन से इज दैट दीज सेशंस दे आर योर डेमो सेशंस। ठीक है, एक तरीके से डेमो सेशंस हो जाएंगे ये आप लोगों के लिए, राइट। सो मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये मानना है आप लोगों से कि भाई आप लोग थोड़ा सा अगर अपने आप को बेहतर तरीके से यहाँ पर इन क्लासेस में देखते हैं, इन क्लासेस में पाते हैं अपने आप को, सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हम सभी लोगों के लिए। और हमारी जो अप्रोच है पेपर को लेकर के, डेफिनेटली उसको भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ओके, जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी ऑफ यू गाइस टू जॉइन मी। ओके, या प्लीज ज्वाइन ASAP। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, लाइक आई सेड, हमारा जो सेशन होने वाला है, जो हमारा सेशन है, दैट विल बी ऑन ऑप्शनल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेगमेंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो अभी जैसे ओशनोग्राफी है, तो ओशनोग्राफी के ही कुछ हम लोग एस्पेक्ट्स जो हैं, उन्हीं एस्पेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। Now, whenever I see about oceanography, या जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ओशनोग्राफी के रेफरेंस में, तो मैंने आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। It really is a very important segment, okay, very important segment। वो आपको वहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि क्या क्या आपको समझ में आएगा और क्या क्या आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई सेड, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई वेरियस प्रोसेसेस, थिंग्स गोट स्टार्ट विद evaporation। Now once we are done with evaporation, okay, once we are done with evaporation, then we see the process of condensation happening. After condensation you have precipitation, और प्रेसिपिटेशन के बाद जो लास्ट में प्रोसेस आता है वो आता है परक्यूलेशन। अब इतने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना तो हम लोगों को क्लियर होता है। ठीक है, कि ये सभी के सभी आपके एस्पेक्ट्स हैं, ये सभी सारे आपके सेगमेंट्स हैं। नाउ कुछ और भी ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ और भी ऐसे आपके एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से
ओशन जो है वो इतना ज़्यादा यूनिक हो जाता है, इतना ज़्यादा हमारे लिए अलग सा हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं व्हाट आर दीज वेरियस थिंग्स, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, डेंसिटी, इन सभी चीजों का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, किस तरीके से हाउ एक्चुअली दीज थिंग्स हैपन, हाउ एक्चुअली दीज थिंग्स वर्क, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना समझना जरूरी है। ओके, व्हेन आई स्पीक अबाउट द टेम्परेचर एस्पेक्ट, जब मैं टेम्परेचर एस्पेक्ट की बात करता हूं तो टेम्परेचर कुछ पैटर्न होता है बेटा। जनरल अगर मैं आप लोगों से इफ आई आस्क यू और इफ आई गिव यू अ वेरी जनरल एक स्टेटमेंट दूं, तो टेम्परेचर आप लोग समझ सकते हो कि भाई टेम्परेचर ऑफ वाटर हायर ऑन द सी सरफेस एंड it decreases as one goes deeper। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो सी सरफेस पे, जैसे जैसे यहाँ पे आप ऐसा देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ, ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक ओशन। ओशन का जो ऊपर का सरफेस है, दिस सरफेस ऑफ द ओशन, इट रिसीव्स सनलाइट डायरेक्टली। सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो किसके ऊपर पड़ता है, वो इसी सी सरफेस के ऊपर होता है। सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड, दैट टेम्परेचर हियर will be very high। अब जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है, द मोमेंट द डेप्थ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वैसे वैसे द टेम्परेचर also starts falling। टेम्परेचर भी धीरे 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 क्या होने लगता है, वो नीचे होने लगता है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर नीचे हो रहा है तो हम लोग देखेंगे अलग अलग चीजें, अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये देखेंगे कि भाई टेम्परेचर नीचे तो आ गया बट इट विल नेवर बी बिलो 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, इट विल बी नेवर बी जीरो और बिलो। क्योंकि जीरो और बिलो की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई जीरो और बिलो में हम लोग क्या देखते हैं, जीरो और बिलो में जो अंदर का सब सरफेस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो हमेशा जमा का जमा ही रह जाएगा। पानी कभी भी नीचे ठंडा होता है बिल्कुल, इट कैन गो डाउन टू 1 डिग्री सेल्सियस, इट कैन ऑल्सो गो डाउन टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। एंड मोर ओवर एक बात आप ये समझिए, सादे सादा पानी का जो सादा पानी होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, और जो सलाइन वाटर होता है, जो ब्रैकिश वाटर होता है, उसका जो मेल्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझ लीजिए कि भाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ saline water is different, it is different from what is the freezing point of normal water, different from the freezing point of normal water।
ठीक है। तो अब ये इतना पैटर्न, इतना एस्पेक्ट मुझको समझ में आ रहा है, इतना मुझको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो असली चीज है समझने वाली, स्टूडेंट्स, वो असली चीज यहाँ पर समझने वाली है कि व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट एग्जैक्टली इज द टोटल प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई द सोर्सेस ऑफ हीट, the sources of heat for the ocean water, what are the various sources of heat for the ocean water। तो यहाँ पर आपको एक चीज आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि भाई देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हीट फॉर द ओशन वाटर। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन, मतलब जो सूर्य की किरण है, जो सन की किरण है, सन की रेज आती हैं और जो वाटर सरफेस पे गिरती हैं डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा। सो द absorption of the solar radiation falling on the water surface। Okay, falling on the water surface, ठीक है। This is condition number one। दूसरा, number second will be the conventional current, the convectional currents, the convectional currents in the ocean। See, there are several convectional currents that you can find in the ocean, and why exactly do they happen? They happen because of the internal heat, that is internal heat of the earth, okay, the internal heat that is produced by the earth। So the convectional current in the oceans, okay, because of the internal heat of earth, राइट। तो यहां पर ये एक चीज हम लोगों को दिखा दी जाएगी। अच्छा, इन ये दोनों जो हैं, दे आर प्राइमरली द मेजर सोर्स ऑफ हीट, major source of heat for the ocean water। They are the major source of heat for the ocean water। Now these are major sources, fine, but there are several minor sources as well। So what are those minor sources? माइनर सोर्सेज ऑफ हीट कौन कौन से हो जाएंगे माइनर सोर्सेज? जैसे कि convection of sensible heat, the convection of sensible heat, ठीक है, from the atmosphere to the sea। atmosphere to the sea, okay। The other than this, heat produced by the various chemical and biological processes। Now see, you know, when all these processes that are taking place, if I'm speaking about the physical and the chemical processes that are all taking, in fact some biological processes as well, so when I'm talking about all those processes, a lot of heat is produced during these processes as well। So the heat produced by the chemical and the biological processes, the heat produced by the chemical and the biological processes, chemical process and the biological process। Okay, now sometimes what happens is when the condensation of the water vapor, like we have already discussed in the water cycle, what happens exactly in that? I have told you that the process of evaporation, it starts. Once the evaporation has started, the vapors that are traveling, as the vapors move upward, so we have already heard about the term the normal lapse rate,
So when I'm speaking about the normal lapse rate, that means every 1 kilometer there is a decline in the temperature by almost 6.5 degrees. That is, for every 1 kilometer, anything goes upward. So there is a decrease in temperature by almost minus 6.5 degrees. Okay, let's assume, let's say if the temperature on the ground is around 30 degrees Celsius. So if you travel 1 kilometer from the surface to upward, so there would be a decrease of minus 6.5. That means 1 kilometer above from sea surface, the temperature would be around 23.5 degrees Celsius. You again go another 1 kilometer, so there will be again a decrease of minus 6.5 degrees Celsius. So I have already told you this thing, that what happens when the vapors, after evaporation, when the vapor it starts traveling upward, the temperature it starts reducing. What exactly is the reason? What exactly is the process because of which these things they have turned into vapor? The process is simply evaporation. There was sufficient amount of heat that actually helped the water to evaporate. So when the heat is reducing, it is quite obvious that those vapors that we can see, they will actually try to come back into their original form. And what was their original form? Their original form was water. So the condensation that takes place, okay, the condensation that takes place, that is also actually responsible. So this is how things they happen, things they actually takes place. Okay, now you know that you must have heard of the heat budget. I'll be very basic, I'll be very simple about this. Heat budget, amount of, like, whatever heat earth receives from the sun, the same amount of heat it's transferred back. Okay, earth doesn't keeps any heat for itself. However, there is only very specific difference. What exactly is the difference? The difference is that the earth receives the solar radiations. The solar radiations that are being received by earth, they are in what form? They are shortwave. Whereas when earth send back all these entire solar radiations, so while sending back the property changes and they became the long wave radiations. Okay, so if you have any query, please ask me. Till here, sir, is geography very tough, or if I choose this option? Ashruva, no, Ashruva, absolutely not. In fact, if you are taking geography optional, then I am telling you, you have definitely a tremendous chance of increasing your score. Like, if I'm saying that if I'm planning, if you're targeting almost 300 plus in your option subject, then I can assure you this thing, I can ensure this thing absolutely to you, that if you are following the instructions properly and if you have taken the content material seriously, then no one can actually stop you from scoring at least 300 plus marks in your geography optional. This is something that I can ensure you. Okay, absolutely, I can ensure you. So guys, if you have any doubts, any queries so far, kindly please ask me. Only then we will move ahead. Okay, only then we'll move ahead. Please, jaldi jaldi. Okay guys, so let's move forward now. I have made myself very clear regarding the sources. Now we have studied about what are the major sources and what are the minor sources. Now guys, let's talk about the surface temperature of the ocean water. Okay, surface temperature of the ocean water.
Now see students, one thing that you have to understand here. When I'm talking about the surface temperature of the ocean water, trust me, it is not going to be uniform everywhere. Just imagine like this, I'm telling you. For example, you have Atlantic Ocean. Okay, you have Atlantic Ocean. Now you guys know that Atlantic Ocean has its affinity near the equator as well. That's the reason you see Gulf Stream, which is a warm water current originating from this area. Similarly, if you're moving upward, if you're moving towards the pole, so what will you see? You will see that the moment the latitude is increasing, similarly, the temperature level will also change. The more you will go away from the equator, the more cold it will be. The more near you go towards the equator, the more hotter it's going to be. So when I'm talking about the surface temperature of the ocean water, you have to understand one thing very primarily, and that is the ocean water temperature, the surface temperature. It is not uniform at all. Okay, and it is really very complex. Now, generally, if you take a general idea, the oceanic temperature decreases when one moves from the when a person moves from the equator towards the pole. ओके, बेसिक आइडिया है, बहुत बेसिक, बहुत जनरल आइडिया है भाई। इक्वेटर पर है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो टेम्परेचर जनरली बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे ऊपर पोल्स के टुवर्ड, वैसे वैसे हम लोग क्या देखेंगे, वैसे वैसे हम लोगों को दिखाई देगा कि भाई जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। ओके, और यहीं पे अगर मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया दे दूं, इफ आई गिव यू अ वेरी जनरल आइडिया, सो on the surface, on the equator, the temperature the temperature of the ocean's sea surface is 27 degrees Celsius. Okay, 27 degrees Celsius. Now also what we say is it is considered as optimum for the creation of cyclones, because recently you must have seen Yas, you must have seen Taute, all these cyclones when they came. And if you're going for tropical cyclones, one thing that is mandatory is the average temperature required for the formation of a cyclone, that to the tropical cyclone, it has to be 27 degrees Celsius. Now this is the ideal temperature which is present near the equator. Now what are the different temperature at different latitudes? We know that equator is 0 degree, but what is the temperature at 20 degree? What is the temperature as 40 degree latitude? What is the temperature at 60 degree latitude? So let me share you the data with you guys. At 20 degrees latitude, the average temperature found is around 23 degree Celsius. Now if I'm talking about 40 degrees latitude, the temperature found is around 14 degrees Celsius, whereas at 60 the temperature is as low as 1 degree Celsius. Okay, right? So you can see this. Now if I'm talking about the polar region, the temperature throughout is always minus 1.8 degree Celsius.
and actually this is the freezing point of the saline water. I told you, for normal water category, the freezing point is 0 degrees Celsius, whereas for saline or the brackish water, it is around minus 1.5 degree Celsius. Okay. However, there are several instances. For example, if I'm talking about the summer season right now, for example, June, July. So such season, in the Persian Gulf, the temperature these is as high as around 32 degrees Celsius. So this is again, there is one condition. Okay. So you have to go through each and every aspect. Okay. You have to go through each and every aspect. Also, we will study about the data, about a table that is present here, which actually specifically mentions about what are the different temperature at different latitudes. Okay. Okay. Any issue, any doubt, please ask me. कोई भी doubt है तो please. Okay. एक चीज आप और ध्यान रख लो. Just kindly remember this, guys. When I say, if you compare the southern and the northern hemisphere, so southern and the northern hemisphere, among both these hemispheres, at which region will you say the coldness is relatively higher? So if I'm comparing both the northern and the southern hemisphere, the temperature is relatively less in the southern hemisphere. The temperature is relatively less in southern hemisphere. Why? Why it is less? The reason why the temperature is less, because of the thick ice sheets of the Antarctica. Okay, because of the thick ice sheets of Antarctica, we see that the temperature at the southern hemisphere is comparatively higher as when we are comparing it with the northern hemisphere. Okay, any doubts, any queries? So please ask me. Please. बताइए. Any queries? So please ask me. Now, let's talk about what are the various factors that actually affect the horizontal distribution. Now, there are two type of distribution. Now, number one thing, which is very clear, okay, which is very clear. The factors affecting the distribution of temperature. Now, the factors affecting the distribution of temperature. How actually do you speak about the distribution of temperature? Now, there are two parameters, there are two aspects. Number one will be the horizontal distribution. Number two, the vertical distribution. Just wait a second, guys. एक सेकंड. Okay. Now, people, when I'm talking about the horizontal and the vertical distribution, see, temperature has its role. पहला कंडीशन में क्या बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टली हम लोग देख रहे हैं. दूसरा मैं बोल रहा हूं कि वर्टिकली हम लोग देख रहे हैं. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल.
हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर में कैसे कैसे बदलाव आता है, जैसे कि मैं एक आप लोगों को बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर ये सेम सी सरफेस है, ये सेम सी सरफेस है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये जो लैटिट्यूड है ये बढ़ता जा रहा है, ये वाटर बॉडी ऐसे यहाँ पर, यही सेम वाटर बॉडी यहाँ पर भी है। देयर मस्ट बी सम इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूड at this particular position. Maybe chances are quite high that this particular region might be near to equator. अभी एक बात बताओ, when this place is near the equator, so obviously कहीं ना कहीं high heat इक्वेटर का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और जब इक्वेटर का इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई यहाँ पर जो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग देखें, मान लेते हैं कि ये वाला एरिया अगर पोल्स के पास है, तो पोल के पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पोलर इंपैक्ट पड़ेगा, और पोलर इंपैक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे जो वाटर सरफेस होगा, सरफेस वाटर जो होगा उसमें अलग आपको डिफरेंस मिलेगा। दूसरा एक पैरामीटर, द सेकंड पैरामीटर दैट वी हैव, द सेकंड पैरामीटर इज व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सी सरफेस टुवर्ड्स द डेप्थ, when we are going towards the oceanic surface, okay, don't get confused here, this is a significance। ये वाला जो एग्जांपल लिया है मैंने, ये आपको हॉरिजॉन्टल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि भैया एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक, लेकिन द अदर वन इज दिस इज द सी सरफेस एंड दिस इज द ओशनिक डेप्थ, दिस इज द बॉटम ऑफ द सी, लेट्स से दिस इज द बॉटम ऑफ द सी and this is the sea surface, right? Now, this is quite obvious here. This is quite easy to understand that the temperature on the sea surface is definitely going to be very higher, right? And the temperature at the bottom of the sea would be absolutely very lower. One very simple reason, absorption of the solar radiation at the water. Also, you must know actually that there are two zones. One is the photoic zone and the other one is aphotoic. Photoic zone, the area of the ocean till where solar radiations reach, till where the solar radiation reaches. Okay, aphotoic zone, the area till where the rays fail to reach. मतलब यहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना यार कि जहां तक पहुंच रही है सोलर रेडिएशंस वहां तक हमारे पास हीट का इंपैक्ट होगा, जहां तक नहीं पहुंच पा रही है वहां तक ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम लोग कह सकते हैं जिस रीजन के बाद सनलाइट पहुंच नहीं सकती है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर एक वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है तो एब्सोल्युटली एकदम गुप्त अंधेरा, डार्कनेस एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज, जब लाइट नहीं पहुंच रही मतलब हीट नहीं पहुंच रही है, और जब हीट नहीं पहुंच रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, वो गिरने लगेगा। कंडीशन समझ में आई? यस, यही मैं एग्जैक्टली आपको कन्वे करना चाह रहा हूं, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट the horizontal distribution of temperature of the ocean, the horizontal distribution of the temperature of the ocean। नंबर एक चीज सबसे पहला मैंने आपको बताया ना भाई, फैक्टर्स कई सारे होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनकी मैं बात करता हूं। नंबर एक है यहाँ पे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का एग्जांपल देकर के दोबारा से टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, ओके। लैटिट्यूड का मैंने आपको बताया कि भाई एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम सी इक्वेटर, यहाँ पे एक ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपके सामने बना दे रहा हूं, ओके ना। आई एम मेकिंग दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस। ये ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये कंप्यूटर पे इससे अच्छी ड्राइंग नहीं बन सकती है, ठीक है। इक्वेटर, पोल,
as you start traveling. See, when I say when the when you start moving northward or southward from equator, the temperature as the latitude increases, as the latitude increases, going either direction, either direction से मेरा मतलब है नॉर्थ या फिर साउथ, गोइंग either direction, that is either north or south, either north or south, क्या होगा? What will happen? The temperature will decrease. The temperature will definitely decrease. हालांकि पोलार रीजन्स में जब हम लोग जाते हैं तो पोलार रीजन्स में ऐसा सर्दी गर्मी के टाइम पे कुछ नहीं, सर्दियों में भी वैसा ही रहता है, गर्मियों में भी वैसा ही टेम्परेचर रहता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि भाई अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई जब गर्मी आती है तो उसमें कंपैरेटिवली जो चेंज है वो कहीं ना कहीं पोलार लेवल पे भी फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये होता है। दूसरा टेम्परेचर, ओशन करेंट्स। Now, when I speak about the ocean currents, one very peculiar thing, one very important thing to understand here is ocean currents के significance में। देखो ocean currents क्या होता है? Ocean currents, movement of water, movement of water. From where actually the origin takes place? The movement of water from equator towards the poles and also from poles towards the equator. Towards the equator. Now यार एक चीज है, इक्वेटर से पोल के टुवर्ड्स जाता है तो ऑब्वियसली गर्म पानी क्या है, पोल्स के टुवर्ड्स जा रहा है. The warm water is going towards the poles. If I'm saying the poles towards the equator, that means the water is coming from the poles towards the equator. That means when the movement of water takes place, इक्वेटर से पोल के टुवर्ड्स, तो गर्म पानी जो है वो ठंडी दिशा में जा रहा है, और जब पोल से इक्वेटर की ओर बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं यहाँ पर कि ठंडा पानी जो है वो गर्म पानी की जगह से, ठंडा पानी जो है वो गर्म लोकेशन की तरफ जा रहा है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है ओशन करेंट्स का भी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है. मैं एक एग्जांपल बेस्ट थिंग वुड बी नॉर्थ Atlantic drift current. Now, when I'm speaking about the North Atlantic drift current, North Atlantic drift current originates, it is what? It is a warm water current. Because it is a warm water current, that means it carries warm water. इसकी ट्रैवलिंग जो होती है ये होती है कहां पर? ये होती है जो ईस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप है उससे भी थोड़ा सा और, जैसे अगर हम लोग बात करें, सॉरी, द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप से भी थोड़ा सा और वेस्टर्न होकर के हम लोग देखते हैं. अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो लेट्स अज्यूम ये कुछ ऐसा, और ये यहां पर आपका ग्रेट ब्रिटेन, ये हो गया जीबीआर मतलब यूनाइटेड किंगडम, और ये हो गया आपका यूरोपियन
कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये बीच में आपका ये यहाँ पे ये नॉर्थ सी हो गया, ये ऊपर नॉर्वियन सी हो गया, ये बीच में आपका छोटा सा एक इंग्लिश चैनल जा रहा है। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक आपका वार्म वाटर करंट, ये वार्म वाटर करंट आपका जाता है। नाउ व्हाट इज द नेम दैट इज यूज्ड फॉर दिस वार्म वाटर करंट? द नेम इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। अब ये जो वार्म वाटर करंट है ये क्या करती है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर ये जो आपका आर्कटिक सर्कल है, दिस आर्कटिक सर्कल, अब जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि भाई अगर ये हिमालयस नहीं होते तो साइबेरिया का सारा ठंडा हवा इंडिया में आ जाता और हाफ ऑफ द इंडिया वुड हैव बीन अ कोल्ड डेजर्ट। तो भाई आर्कटिक सर्कल में से ही तो वो ठंडी हवाएं आती हैं जो साइबेरिया की ओर अफेक्ट करती हैं। वही ठंडी हवाएं जो हैं वो इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट को भी इम्पैक्ट कर रही हैं, और जब वही ठंडी हवाएं इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट को भी इम्पैक्ट करती हैं तो ठंडक के असर को पूरा का पूरा निग्लेक्ट कौन करता है, वो करती हैं ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट विच इज अ वार्म वाटर करंट, गर्म पानी लेकर के आती है। अब ये जो गर्म पानी है ये यहाँ की ठंडी हवाओं को पूरा का पूरा नल एंड वॉइड कर देता है, और इसी नल एंड वॉइड प्रोसेस होने के कारण हम लोग देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न यूरोप के कई सारे देश हैं, कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, ओके, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, काफी ज्यादा विकसित देश है, ठीक। तो भाई ये यहाँ पर ये बात हो गई। सो ऑब्वियसली अब वहीं सेम अगर मैं कोल्ड वाटर करंट की बात करूंगा तो कोल्ड वाटर करंट अपने साथ क्या लेकर के आएगी, वो अपने साथ ठंडक लेकर के आएगी। कोल्ड वाटर करंट मान लो किसी ऐसी जगह पर पहुंच गई तो वहां पर आप एक चीज ये समझो, कोल्ड वाटर करंट क्या करती है, कोल्ड वाटर करंट इतनी ठंडी होती है कि वो वहां पर बारिश के प्रोस्पेक्ट्स तक पूरे के पूरे खत्म कर देती है। बारिश के प्रोस्पेक्ट्स खत्म, बारिश के प्रोस्पेक्ट्स कैसे बनेंगे भाई, जब इवापोरेशन होगा। अब भाई जब आप इतनी ठंडा पानी लेकर के वहां पे बैठे हुए हो, कहीं पे कोल्ड वाटर करंट आ गया मतलब ठंडक, ठंडक मतलब जीरो इवापोरेशन, जब इवापोरेशन ही नहीं होगा तो बादल ही नहीं बनेगा, जब बादल ही नहीं बनेगा तो बरसात कहां से होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो इसके बाद जो अगला हमारा एस्पेक्ट निकल करके आता है, द थर्ड एस्पेक्ट इज व्हाट, द थर्ड एस्पेक्ट इज प्रिवेलिंग विंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिवेलिंग विंड्स की। जब मैं बात करता हूं तो भाई प्रिवेलिंग विंड्स आप ऐसे समझो ना यार, सिंपल सी बात है, गर्म हवा जब चलती है, when you say कि मतलब एक जब गर्म हवा, warm air mass when it goes over the land, तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है बरसात, इवेपोरेशन के बाद अगला प्रोसेस कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद अगला प्रोसेस आपका प्रेसिपिटेशन। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वही ठंडी अगर हवा है, तो अगर ड्राई हवा आ रही है जो कि स्नोई एरिया से आ रही है, तो हम लोग क्या देखते हैं, वो उन सभी जगहों के टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देती है पूरा का पूरा। सो प्रिवेलिंग विंड्स दे हैव देयर इम्पैक्ट, दे हैव देयर वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। ओके, राइट, ओके। उसके बाद एक और फैक्टर होता है लोकल वेदर। जैसा लोकल वेदर होगा, अब जैसे कि आप एक बात समझो, इक्वेटोरियल रीजन के पास की अगर मैं बात करता हूं तो रोज वहां पर इक्वेटोरियल रेनफॉल होता है, इट रेन्स एवरी डे। जिस तरीके का आपका लोकल वेदर होगा उस तरीके का हम लोग देखते हैं। भाई देखो हमारे यहाँ ठंडी में बरसात बहुत कम होती है, वेरी फ्यू। हमारे यहाँ मानसून का एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आप ये समझो कि भाई बरसात जो है वो कहीं ना कहीं लोकल वेदर इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है। और वही आपका लोकल वेदर, अगर ओशन, आप एक चीज समझो ना, जिस जगह पर गर्मी है, मान लो कि ये एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट है,
यहाँ पर सदर्न अगर हम लोग मान लेते हैं, चलो ऐसे समझो, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ले दे करके एक आध कंट्री आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इंडोनेशिया वगैरह का। अब जो ऑस्ट्रेलियन समर होती है वो आती है दिसंबर में, हमारे यहाँ पे दिसंबर में क्या होता है, सर्दी, उनके यहाँ पे क्या होता है, गर्मी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोकल वेदर जैसा वहां का वेदर रहेगा वैसे ही तो पानी के ऊपर भी। अब वहां पे जब सर्दी होती है तो वहां पे ऐसा थोड़ा ना होगा कि पानी गर्म चल रहा है, नहीं। जब वहां पर ठंडक होगी तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम इंपैक्ट ऑन द लोकल वेदर, विल हैव सम इंपैक्ट ऑन द ओशनिक टेम्परेचर। और वो जो ओशनिक सरफेस टेम्परेचर होता है वो इस फैक्टर से काफी ज्यादा डिपेंडेंट होगा। ओके, सो आई थिंक ये था हमारा आज का अपना सेशन, और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय। श्रीकांत साइनिंग ऑफ। ओके।